Namaskar everyone, and thank you very much for joining. Today we are going to talk about a disease, a condition which perhaps is a very common term and everybody knows about it. Diabetes एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना या थोड़ी बहुत जानकारी जिनको नहीं है. We are now practically referred to as the diabetic capital of the world. With more than 77 million, करीब 8 करोड़ डायबिटिक्स इन आवर कंट्री. और दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि ये वो पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज डायग्नोज्ड हैं. कहा जाता है कि बाय द टाइम यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज यू माइट हैव ऑलरेडी लिव्ड with diabetes for about 5 years. That means there is a huge population of our country which is living with diabetes and yet not diagnosed. And how serious is the condition? I don't mean to scare you, but we must appreciate that it is among the top 10 contributors to mortality. One of the leading causes of mortality in this country, along with all its complications like cardiovascular disease, kidney failure, retinopathy, or mycardiopathy, etc. Now we need to address it. The burden of this disease is not just in population, but on the economy, in our work life, in our personal lives, in our physical, mental health, and all-round health. Diabetes does not affect a person, it affects the entire family. और दुख की बात ये भी है कि with the change in lifestyle, with sedentary lifestyle and the kind of dietary habits we have, very early age, diabetes is getting diagnosed at much earlier age, at a much earlier age than before. पहले हम देखते थे कि 50 साल 55 साल में डायबिटीज काफी कॉमन बात है, बट अब वैसी बात नहीं है. 35, 40 और उससे कम में भी डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है. Given this very important subject, we have two very well-known, respected experts in their field. And today we are going to discuss about diabetes, and there are no better experts than Dr. Sunil Mishra and Dr. Leena Priyambada to join us for this topic. Let me quickly introduce our experts for the evening today. Dr. Sunil Mishra is an MD Internal Medicine from KGMC Lucknow. Dr. Mishra also has a DM degree in endocrinology and metabolism from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. He has over 18 years of experience so far in endocrinology at various prestigious institutes like AIIMS New Delhi, SGPGA Lucknow, HIHT University Dehradun, and currently he's working at Medanta The Medicity here in Delhi NCR since 2010. He is currently the Senior Director in the Division of Endocrinology and Diabetes at Medanta. Before joining Medanta, Dr. Mishra was working as an Associate Professor at HIHT University Dehradun, where he established the endocrinology and diabetes specialties in the Department of Medicine. Dr. Sunil was awarded the 6th A.V. Gandhi Award for Excellence in Endocrinology in the month of March 2008 for the best research paper in endocrinology and metabolism. He was also awarded the Dr. N.N. Gupta Gold Medal for being the best candidate in MD Internal Medicine examination of 2003. Welcome, Dr. Mishra. Thank you very much for joining. Thank you for your time. Thank you. I'm really delighted to be the part of this discussion. Yeah. Thank you, sir. Let me introduce to you Dr. Leena Priyambada. Dr. Leena Priyambada is a senior consultant in Pediatric Endocrinology in Rainbow Children's Hospital, Hyderabad. Having done her MD Pediatrics from PGI MER in Chandigarh and subsequently trained in Pediatric Endocrinology from SGPGI Lucknow, she has more than 15 years of experience in managing children and adolescents with hormonal disorders. One among them is diabetes. Dr. Leena was awarded the NCD Observership in 2015 and did Pediatric Endocrine Observership at Cincinnati Children's Hospital
That's in Ohio, USA. Recently, she further advanced her pediatric diabetes and endocrinology training by doing another fellowship at the Institute of Diabetes and Endocrinology, the Children's Hospital at Westmead, Sydney, that is in 2020. She was the project officer for the 2022 International Clinical Practice Consensus Guidelines for Diabetes in Children and Adolescents by ISPAD, that is International Society of Pediatric and Adolescent Endocrinology. She is currently also an advisory committee member, council member of ISPAD. Welcome, Dr. Leena. Thank you very much for your time. We really appreciate having you here today. Thank you, Dr. Babatosh. I'm happy to be here. So, Dr. Mishra, let me start with you, sir, with the first question. Now, we have so many questions, and I had to spend a lot of time carefully selecting only a few of those given the time constraints we have for today. A very common question today, and a claim by many as well, is type 2 diabetes reversible? And a sub-question to that would be, at what stage do you recommend patients to get onto medication? Because a lot of people intend to at least try to manage type 2 diabetes, at least in the early parts of the disease, by diet, exercise, and other lifestyle modifications, etc. It is well known that it's a progressive disease. What do I mean by the progressive disease is that when any person is detected with a type 2 diabetes, so at the time of the detection, the pancreatic beta cell capacity is already lost by 30 to 50%. In subsequent year, what we expect that there will be the progressive decline in the insulin capacity because the beta cell death will continue to happen. So it is easy to control diabetes in early years by lifestyle means, and later on it becomes difficult to control with the fewer medication, and at some point of the time people do require insulin for better control of the diabetes. Now, what we know today is that a good glycemic control, good sugar control, along with the taken care of the associated complication in the beginning is very important. First 5 to 10 years after the diagnosis of the type 2 diabetes is the golden period of the diabetes management. If anyone is able to maintain and sustain good glycemic control in first 5-10 years, so there is a legacy for the good glycemic control later on, and that helps in prevention of the complication even at 20 years. So that is very well documented. So don't miss this golden period. First thing is that don't try to experiment, because this disease is asymptomatic, means most of the people won't have any symptoms, and therefore they will argue and with themselves also, not with us, that why they shall take the medication because there are no symptom otherwise. But the problem is that once symptoms start with a complication, then complication is not end with one organ, it will end with other organs also. So controlling diabetes is very important. Whether you are able to control with the lifestyle means, whether you are advised to take oral pills, or if require insulin at right time, you should do it, because keeping diabetes with diabetes is easy to stay with and less burden on your pocket rather than diabetes with complications. So suppose tomorrow if anyone gets with the complication, the cost of life, quality of life, and also the quantity, I will say the longevity is affected because of the complication. Now coming to the next question is that, is it reversible? Because there is a lot of talk nowadays about the reversibility of the type 2 diabetes. Now, how the story started, if I take little back, so audience will better able to understand. So sometime in before 2000, when the bariatric surgery started happening, so there is understanding that once the people lose weight by 20 to 40%, so after the weight loss, many people who had established diabetes, they were not requiring medication, and that the requirement goes suddenly off after the bariatric surgery. So from the very few days after the bariatric surgery, there is no requirement of the oral medication, and even the insulin goes away, especially if they are having the diabetes for first
a couple of years, 5 years or 10-year duration, and they were on a limited number of medication, so not on the aggressive dose of the insulin therapy. And that's why many bariatric surgeons promote this bariatric surgery as a metabolic surgery, because we will be able to reverse your diabetes. Now, can it be replicated by dietary means? So there were many anecdotal evidence for that, but the first thing which was proven by the Dr. Roy Taylor and his group from the Newcastle, UK. So they did the diabetes reversal trial, and people were given with the low-calorie diet, supervised diet for 2 to 8 weeks, and many of those people who were on this low-calorie diet were able to stop the anti-diabetic drugs, and they went in the reversal, and their reversal stayed for many months till the trial continued. So more than 65% of the individual were able to reverse the diabetes. Now, who were able to reverse and who were not? People who were able to lose weight by 15% approximately were able to reverse the diabetes. So the weight loss is the key in the people with the type 2 diabetes who are overweight and obese. It should always be tried, right? Even if you are not able to reverse, your addition of the newer pill will be less. So always we try to tell people, don't gain weight, especially the belly fat should be avoided. And if you are gaining weight, obviously be prepared that we have to add more medication. So reversibility is possible, yes. Reversibility of the type 2 diabetes may come with the weight reduction by either bariatric surgery if people are morbidly obese, or by dietary means if they are able to lose around 15% of the weight. But that should be done under the supervision of the endocrinologist or the physician they are looking at. And when you are able to reverse the diabetes, you not only reverse the diabetes, but also reverse many associated complications with the diabetes. So that is important to do. How long it will stay? This question, because even after the bariatric surgery, many people start getting their glucose high after 5-10 years, weight also goes up. So if that happens, at least even for 5, 7 or 10 years, if you are off medication, it is a win-win situation for everyone. So thank you, Dr. Sunil. Thank you for those information. Dr. Leena, Yes. how's type 1 diabetes, for our audience? There are some technical words. Dr. Mishra mentioned beta cells. We are not talking mathematics and physics here. Beta cells are those which secrete insulin in the pancreas, which is the primary organ from where insulin comes. But again, another jargon to say is type 1 and type 2. What is the difference in type 1 as against type 2? And what causes it? Very importantly, we wish to know, at least this much we know, that type 1 is prevalent in children, type 2 more in adults. But having said that, what are the signs? What are the symptoms? What are the red flags parents need to be keeping a lookout for, watch for early detection of type 1 diabetes in children, specifically given that many such children live with this for a while before getting diagnosed? Yes. So type 1 diabetes is a little different from type 2 diabetes. Both are diabetes because both have high blood sugars as a result of whatever causes it. Type 1 diabetes is because of insulin deficiency. So the pancreatic beta cells which produce insulin, because of an autoimmune process, that is the immunity in the body which destroys its own body's beta cells. So as the beta cells start dying, and the insulin producing capacity of the beta cells is decreasing, after a while it cannot sustain the metabolic activities anymore, and the hyperglycemia or the high blood sugars which is in the blood, that becomes symptomatic. This is type 1 diabetes. Type 1 diabetes mostly occurs in children, but it does not mean that type 1 diabetes cannot occur in slightly older children, adolescents, young adults, or even adults. So the basic difference is type 1 diabetes does not have insulin in the body, whereas type 2 diabetes has insulin which does not work. So if something is not there in the body, then it has to be replaced. So when there is no insulin, we have to give insulin. And unfortunately, insulin can be given only by injections as of now. And that is what is the major cause of worry in most families.
Frankly speaking, most of the families who come to us with a child with type 1 diabetes have never heard of the word type 1 diabetes. For them, diabetes is diabetes. They're always keen on asking questions. Can at any point of time, can my child go on to tablets and oral medications instead of and stop insulin? But that is usually not the case. There is a genetic predisposition in the child, mainly the HLA factors, and there is some environmental trigger. Maybe it is an infection. I mean, it is astounding that even after decades and decades of research, we have not really got into the bottom of it. So some people may have the genetic susceptibility. Do they get it from their parents? How is it? And how is the family genetics linked? That is really not very clear. So there is a susceptibility and there is some infection which triggers it. Once the thing is triggered, the autoimmunity goes slowly till, and over a period of years and some months, maybe the beta cells start coming down and there is development of symptoms. So as Dr. Bhaktosh rightly said, it takes a while before symptoms develop. So what are the symptoms? The symptoms are very non-specific symptoms and they will mostly not come out unless we ask for them. So there's a symptom of passing more urine, drinking more water. So the first symptom is child will start passing more urine at night, will get up in the night multiple times to pass urine. So the parents will always feel, oh, he's drinking a lot of water, very good. And that is why he's passing a lot of urine. It's the other way around. And because urine is, there is so much of urine and glucose loss in the urine, child is very hungry, child keeps on eating. So parents are very happy, wow, my child is drinking a lot, my child is eating well, he has never eaten well before, but starts losing weight. That is when the family gets worried. He's eating, he's drinking, why is he losing weight? Why is he always so fatigued? So that is the usual scenario. And to top it all, 85% of the children diagnosed with type 1 diabetes do not have a family history. So they would think, oh, we don't have a family history of type 1 diabetes. Why should my child get type 1 diabetes? So all these things are there. I think the need of the hour, and this we have also put it down in some editorials that we have written, that the need of the hour is spreading awareness of symptoms and maybe, maybe some modules for the health practitioners apart from doctors, where they learn to diagnose type 1 diabetes in the clinic. So, I mean, any child coming with lethargy, weight loss, a definite question by the health professional to ask, is he passing a lot of urine? Is he drinking a lot of water? Is he losing weight? These things will be important. Over to you, Bhaktosh. Thank you, Dr. Leena. It sounds a little scary, honestly. A lot of parents would be a little worried hearing this because, typically in our context of country and cultural context, we want our child to feed more, drink more water, and we are happy, as you said, without knowing, is it induced by us or is it something which is induced by an underlying disease like diabetes and specifically type 1? So I think it is very important parents keep an eye for such symptoms, especially when you talked about fatigue, loss of weight despite eating healthy, drinking a lot of fluids. So that's very important. I'm sure a lot of parents would be taking note. And India is a very young country. We have a lot of children being born every day and a lot of adolescents and children being there. And especially when you mentioned this is very underdiagnosed, I'm sure parents will take a note of this. If I may interrupt you, Dr. Bhaktosh, Yes, at please. this point. So most of the time, they will land up with a physician or a nephrologist thinking it's an urinary infection or maybe some urinary problem. If the amount of frequency of urination becomes a lot. So I think there is also that when the urine starts showing a little bit of sugar, and then that also what is is the diagnosing thing. We are not supposed to diagnose diabetes with urine sugar, but I think that is the first screening thing that usually everyone sees. And that's a very simple test. Anybody getting any doubt, I would recommend that it doesn't cost much, doesn't take much effort. At least do a basic screening to look for sugar in urine and maybe follow up in case there is a need. I appreciate it's not a diagnostic or a confirmatory one, but at least I think in our setup it is easy to do. So parents should take a note of that one. Dr. Sunil, diabetes, whether it is in children, whether it is in adult, we may feel a little more sensitive about diabetes in children, but
it's a big disease burden in our country. When you look at diabetes type 2 in adults in India, it is behind so many other diseases, cardiovascular, nephropathies, kidney failures, neuropathy, retinopathy are caused behind blindness, and on and on. The list is fairly long, I believe, right? But very seldom we talk about its impact on mental health. And I must touch upon this subject because we are coming out of COVID, and we hear and we see a lot of effect of COVID on mental health. I'm pretty sure diabetes is no different. While it is not a short-lived, short-term epidemic, pandemic like COVID, perhaps the impact is even way bigger than COVID, including on mental health. Could you please tell our viewers about what are likely mental health impacts of people living with diabetes? And please touch upon the entire household, because I think diabetes doesn't affect a person, it affects a family. Now, in terms of the mental issue, yes, when you have a disease 24/7 and throughout your life, it does impact your mental health. So it both ways around. Type 2 diabetes affects the mental health, and people with the depression and those who are in sad mood, those who are not exercising, do have a more chance of getting the type 2 diabetes and those metabolic disorders. So it has a huge impact on the mental health, and mental health also impacts the development of the type 2 diabetes in other way around. So therefore, it is important that people should try to prevent the diabetes. And probably one thing you asked in your question, rather than at an individual basis, it is better to start the things at the family level. Because when in a family member, if some person from that particular family is developing type 2 diabetes, I would say everyone in that family is at the risk of developing type 2 diabetes. Because genetically, we all Indian are at risk. So people who are in this frame and people who are listening to us, those who are not diabetic, don't feel that कि उनको नहीं होने वाला है, उनको भी आएगा ये बीमारी. ये तलवार तो सबके ऊपर लटक रहा है. ठीक है. Second, so if I am not following healthy lifestyle, I am not maintaining my weight, I am at risk. So therefore, if anyone in the family is having type 2 diabetes, so everyone should follow the diet which he is eating. यहाँ पर हमको segregate नहीं करने का है. One thing. Second, how to prevent healthy eating, home cooked food, regular physical activity. At least keep two things at your home. एक weighing scale and other is the inch tape. Measure your weight every month. If you are gaining weight, probably you are going into wrong direction. Similarly, the inch tape. If your abdominal girth is increasing, probably be prepared that this kind of the metabolic disorder are going to enter your body. So over to Dr. Baptush. थैंक यू डॉक्टर सुनील. मेरी हालत थोड़ी अजीब है, यूनिक है डॉक्टर साहब. आई हैव ऑल टाइप्स इन माय फैमिली. वाइफ हैड जेस्टेशनल डायबिटीज, फादर एंड मदर आर टाइप 2, and brother is an insulin dependent. So I can relate to, when I'm asking questions about diabetes to you or Dr. Leena, I can relate very well to all that you gentlemen and lady are saying. What I will say, Dr. Baptush, you are having a textbook of diabetes in your dining table or your table. The textbook is already there, right? लेकिन this is वो किताब है सर जो कोई नहीं चाहता अपने घर में हो. But the question you are asking are coming from that textbook only. Absolutely. Absolutely. वो जुबान से नहीं सर, दिल से आ रही है सवाल. Dr. Leena, type 1 we hear you speak about deficiency of insulin in body. शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है या बिल्कुल है ही नहीं. एंड ज्यादातर बच्चों को और एडोलेसेंट को ये होता है. दैट मीन्स दे हैव टू मैनेज इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड इसमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि वी लव फीडिंग आवर चिल्ड्रन. Yes, and our children a lot of times are very fussy about food as well. I have 2 kids and I remember their childhood days. Oh, it's very difficult to, very picky and choosy about food. And children have their own taste anyway. Must be a very difficult task for parents. Because I believe there will be certain dietary advices. What are your advices? How to manage? What kind of diets are good to have? What are the diets are absolutely no? What can be consumed? How to consume? What frequency? A lot of questions people have around this. So हम ये बताते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज में सबसे पहली बात कि इंसुलिन इज नेसेसरी.
इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज नेसेसरी। जैसे बॉडी का काम है कि वो इंसुलिन हर समय कुछ ना कुछ इंसुलिन बॉडी में रहता है, क्योंकि बॉडी को ग्रोथ के लिए इंसुलिन की बहुत आवश्यकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम जब भी कुछ थोड़ा सा खाते हैं तो जैसे ही थोड़ा शुगर बढ़ना शुरू होता है, इंसुलिन बढ़ना शुरू होता है। सो व्हाट वी एडवाइज, आजकल बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज में द बेस्ट थिंग इज अ बेसल बोलस रेजिम। बेसल बोलस मतलब हम एक लॉन्ग एक्टिंग 24 आवर्स काम करने वाला इंसुलिन देते हैं, जैसे कि क्लार्जीन हुआ, लेविमेर हुआ। ये एक इंसुलिन वंस अ डे होता है यूजुअली। उसके ऊपर हम जब भी कोई मेजर खाना खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके साथ हम क्या खाते हैं, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उस हिसाब से हमें एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जैसे ही शुगर बढ़ना शुरू करे बॉडी में, वैसे ही इंसुलिन बढ़ना शुरू करता है। 3-4 घंटे में खाना हजम हो गया तो इंसुलिन खत्म हो गया। ज्यादा इंसुलिन रहेगा तो लो शुगर होगा। इसको बेसल बोलस रेजिम बोलते हैं, एक बेसल और 3 बोलस। तो लोगों का फर्स्ट रिएक्शन होता है कि मैडम 4 बार इंसुलिन लगाएंगे? सो प्री मिक्स नहीं लगा सकते हैं, दिन में 2 बार से हो जाएगा। सो प्री मिक्स में क्या होता है कि बेसल जो लॉन्ग एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग है, वो दोनों एक प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं। मान लीजिए हमने एक सॉल्ट शुगर शेकर में सॉल्ट और शुगर दोनों मिक्स कर दिया है। हम ज्यादा डालेंगे तो दोनों ज्यादा आएगा, हम कम डालेंगे तो दोनों कम आएगा। उससे शुगर कंट्रोल में और हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर्स, हाई शुगर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आजकल जब से ये पिछले मे बी 10-15 ईयर्स जब से ये बेसल बोलस ज्यादा यूज कर रहे हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। पहले था कि इस टाइम पे खाना है, इतना ही खाना है। अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम खाने का टाइमिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सो इंसुलिन इज कंपल्सरी। हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं, लाइक जैसे टेबल के 4 पैर होते हैं, वैसे 4 लेग्स इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंसुलिन, सेकेंड इज ग्लूकोज मॉनिटरिंग। हम जब तक ग्लूकोज नहीं मॉनिटर करते हैं, जैसे हम बताते हैं कि बच्चा आपका आया, उसका शुगर 500 था, उसको देखकर कोई नहीं बता सकता कि उसका शुगर 150 है कि 550 है मोस्टली। So, इसीलिए शुगर चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि कितना इंसुलिन देना है, कितना करेक्शंस देना है और मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्ड इज डाइट। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अबाउट फूड। सो अब हमें ये याद रखना है कि चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स एंड दे नीड द न्यूट्रिशन। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब उनको चाहिए। और हमें ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन की सबसे ज्यादा एक्शन होती है कार्बोहाइड्रेट्स पे। सो हम कितना कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसको हम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं, और हम किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जिसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। सो जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए चीनी के पानी की तरह, और उतना जल्दी वो, उससे शुगर स्पाइक होता है। लेकिन जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें कार्ब्स होता है, या अगर ज्यादा फाइबर और प्रोटीन लेते हैं या ब्राउन राइस लेते हैं, तो वो सब में शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और बॉडी में फ्लक्चुएशंस कम होते हैं। बॉडी में शुगर फ्लक्चुएशंस कम होंगे तो वो बेटर मेंटेन होगा। सो दिस इज, सो इन जनरल हम कोई चीज अपार्ट फ्रॉम जंक फूड हम मना नहीं करते हैं कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं खा सकता, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द फूड कि ये पॉसिबल नहीं है, बहुत क्रेविंग्स करते हैं बच्चे में। तो अगर बच्चे को मना कर दो कि तुम ये नहीं खा सकते तो उसको वही खाना होता है। So something like that. So we just divide it कि किस टाइम में क्या कार्बोहाइड्रेट का हम ग्रुप बना देते हैं, गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स, प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, उनसे चॉइसेस लेते हैं कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, एंड वी गिव देम समथिंग व्हिच इज लिवेबल, समथिंग व्हिच इज डूएबल। सो उससे वो ज्यादा मेंटेन भी करते हैं। फिर उनको हम समझाते हैं, लेट देम चूज व्हाट दे वांट टू डू, वी लेट देम अंडरस्टैंड कि क्या नहीं है। सो दैट इज द सेकंड थिंग। देन इज एक्टिविटी। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। हम जितना एक्टिविटी करते हैं, हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी उतनी बेटर होती है, डाइजेशन उतना बेटर होता है। सो आई वुड से ये सब चीजें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट में, कि पेरेंट्स को बैठकर समझाना है कि क्या टाइप 1 डायबिटीज है, एंड एजुकेशन अबाउट डायबिटीज, अबाउट टाइप 1 डायबिटीज इज द नंबर 1 थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग डायबिटीज इन चिल्ड्रन। यस। So, audience, parents, what you heard, the management of diabetes in children starts with people like you and me who are parents. हमें पहले समझना है before we start telling children. और मेरी एक छोटी सी सलाह है, एक तो रिवर्स साइकोलॉजी, वो मूवीज देखते देखते बहुत सीख गए हैं। डोंट पुश चिल्ड्रन टू मच, दे वुड रेबल। ये मत खाओ बार बार मत बोलिए, देयर आर बेटर वेज टू मैनेज। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो खाने के लिए बच्चों को मना कर रहे हो, डॉक्टर सुनील सर ने भी यही बोला, वो खुद मत खाया करो घर में।
If you are telling your children not to have junk food, you must avoid junk food as well. In general, it is bad nevertheless, whether there is diabetes or no diabetes, right? Now, I'll come back to Dr. Sunil and Dr. Leena, both of you in any sequence. Medicines, drug compliance, absolutely necessary. इंसुलिन हो या ओरल एंटी डायबिटिक पिल्स हो, दवाई टाइम से जो डोसेज में लेना जरूरी है. ये भी ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया आजकल कि डायबिटीज मतलब there are certain foods I must take moderately, certain foods I must avoid, certain foods I may enhance. जैसे डॉक्टर लीना ने कहा, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाएं, फाइबर थोड़ा बढ़ाएं, बैलेंस डाइट लें, फ्रीक्वेंसी में ध्यान दें कि हर बार थोड़ा थोड़ा जंक फूड अवॉइड करें, ये सब है. एक्सरसाइज भी ज्यादातर लोग वॉकिंग या कोई दूसरा एक्सरसाइज, बट अदर देन दिस, अदर देन डाइट, लाइफस्टाइल एंड I think there is a role regular monitoring and follow up plays. बहुत लोग मैं देखा हूं जो कि शुरुआत डायबिटीज तो डायग्नोज हुआ, पहले 6 महीने में 6 बार करवा लिया HbA1c, भले ही जरूरत ना हो हर महीने, बट उसके बाद वो कॉम्प्लायंस छूट जाता है. एंड डायबिटीज इज not just one disease, it affects multiple organ systems. It's a risk factor for many other diseases. क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, और टेस्ट की जो ये फॉलोअप की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, एनी सीक्वेंस. I'm talking about type 2 diabetes, and just let me imagine, and it will be easy rather than some person is coming with me with the type 2 diabetes, now say 45-year-old gentleman, he comes with the diabetes, and he tells me कि शुगर पिछले 5 years से है और मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है. मैं ऑलरेडी मेडिकेशंस ले रहा हूँ, जिसमें कुछ ये मेडिकेशन हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको रेगुलरली मेडिसिन को लूँ, और मेरा ब्लड प्रेशर 150/90 है, मेरा वेट 84 kg है, मेरा BMI 27 के आसपास बनता है, बॉडी मास इंडेक्स. मेरी फैमिली में फादर को डायबिटीज रही है, उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम रहा है. मेरे पैटर्नल अंकल को किडनी का भी प्रॉब्लम रहा था. और हम पूछते हैं कि क्या आप स्मोक भी करते हैं? कहते हैं हाँ, मैं स्मोक भी कर लेता हूँ और कभी कभी अल्कोहल भी लेते रहते हैं. नाउ पुटिंग ऑल फैक्ट्स टुगेदर, वी हैव टू सी हर केस, हर इंडिविजुअल केस डिफरेंट होता है. किताब में जो लिखा है वो डायबिटीज का ट्रीटमेंट लिखा है, बट उस पर्टिकुलर पर्सन का ट्रीटमेंट नहीं लिखा है जो कि मेरे टेबल के अक्रॉस आ गया अब. तो उसका जो ट्रीटमेंट मेरे को, दिस इज द आर्ट और साइंस दोनों चीज है डायबिटीज का ट्रीटमेंट. ना आई हैव टू प्लान एंड टेलर मेड द ट्रीटमेंट टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल. बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा जो डॉक्टर लीना ने भी बताया, कि आपका फूड क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग्स ठीक हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हो, आपके अदर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए, जैसे आपने भी बताया डॉक्टर बख्तोश कि हमको टाइप 2 डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें. जितना टाइप 1 में है उतना ही टाइप 2 डायबिटीज में भी ये हेल्प कर रहा है हमको कि लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए इन सबको करना है. अब हमको इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए? कई बार लोग केवल इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देते हैं और चीजों पे नहीं ध्यान देते. तो डायबिटीज में 2 चीजें होती है हमारे पास में जब आता है, तो हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड करंट सिम्टम्स क्या है. 3 चीजें होती है हमारे पास में. उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, पिछला ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा चला है, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक वो कैसे पहुंचे हैं यहाँ पे. कॉम्प्लिकेशन असेसमेंट करना है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस का हमको टाइम टू टाइम असेसमेंट करना है, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर आज माना जाता है. एंड देन फर्दर उनको हमको बताना है कि क्या ट्रीटमेंट वो अभी ले चुके हैं, उससे उनका कंट्रोल नहीं आया. एवरी टाइम पीपल विल फील चैलेंज जो विच कम्स टू एडल्ट, ट्रीटिंग एडल्ट टू टाइप 2 डायबिटीज, especially those who are uncontrolled, they are reluctant to start on insulin, which is wrong, right? If you have already exhausted the resource of your oral medication stock, 4, 5 different group of medication, डॉक्टर साहब आप अपने वाला दवा लिख दीजिए. मैं कहाँ से दवा लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ डायबिटीज मेडिसिन ले रहे हैं. नाम बदलने से तो कुछ नहीं होगा ना. तो आपको समझना है कि अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी है तो इंसुलिन भी लेना है साथ में. सो नाउ कमिंग टू द टेस्ट, which we do some test regarding the complication assessment, some test regarding to your symptom, and then basic test for the diabetes. So उसमें एक जैसे हीमोग्राम करा लिया,
एक हम ग्लूकोज का लेवल हो गया, 3 मंथ का एवरेज HbA1c टेस्ट हमने कराया, जिसको हम यूजुअली 3 मंथ्स 4 मंथ्स पे करा लेते हैं। देन वी डू ए रूटीन यूरिन रूटीन टेस्ट, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव टेस्ट है, जिसमें कि किडनी का असेसमेंट हो जाता है एक ही टेस्ट में प्रॉपरली। यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो, जिसको कि अगर गड़बड़ आया तो हम ट्रीट करते हैं, और नहीं आया, ठीक आया तो हम साल में एक बार करते हैं। इसके अलावा आप उनका लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, EGFR कैलकुलेट कर लेते हैं क्रेटिनिन से, जिससे कि हमको किडनी के फंक्शनल स्टेटस का प्रॉपर आइडिया मिलता है। देन वी डू ए लिपिड पैरामीटर टेस्ट, फास्टिंग में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड्स वगैरह कराते हैं, जो कि हमको लॉन्ग टर्म में हार्ट प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी होता है। देन आज के समय में आपने देखा होगा, सो मेनी पीपल आर कमिंग विद दी फैटी लिवर एंड लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैट प्रॉब्लम बाय द LFT अलोन, बट LFT किया हमने, इधर से CBC में प्लेटलेट किया, तो हम एक FIB-4 स्कोर होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। FIB-4 स्कोर प्रायोरिटाइज कि किस पर्सन का हमको फाइब्रोस्कैन करना है लिवर के लिए, किसका अभी हम केवल लाइफस्टाइल पे लेके चलते हैं, तो हमको वो प्रायोरिटाइज वहां से पता लग जाता है। FIB-4 इज जस्ट लाइक हमारा EGFR कैलकुलेशन होता है किडनी के लिए। देन एक थायराइड फंक्शन टेस्ट, एनुअल रेटिना का चेक जरूरी है अगर आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट हर एक इंडिविजुअल का प्रोबेबली जरूरत नहीं है, लेकिन अब इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, 45 ईयर, फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का भी इश्यू है, ही इज ए स्मोकर। नाउ दिस इज नॉट ए सिंपल सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ मी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी भी है, तो इनका some sort of the cardiovascular assessment I have to do, which may be a simple ECG, echo, या stress test, या if require the coronary calcium score to be planned according to the individual patient. So this is how it goes. And then of course, once the treatment plan is over, diet, exercise, सब कुछ समझाया, next very important thing comes is the monitoring, because monitoring ही ऐसा tool है कि जो आपको help करेगा। And nowadays we have so many different technologies available for monitoring. You have a continuous glucose monitoring system आपका available है, ठीक है, point of care devices आ गया है HbA1c के लिए, तो बहुत easy है, but ultimately 95% you should be ready to take the step rather than we are doing. So हमारा काम केवल 5% है। Dr. Leena, I have some questions that our audience have asked, but before I move in there, I want to tell audience what Dr. Sunil said, what Dr. Leena said. Type 2 diabetes, type 1 diabetes, irrespective, it is manageable. It requires discipline. And diabetes एक ऐसी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, काफी सारे ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। आज की दुनिया में ट्रीटमेंट अवेलेबल है बहुत सारी चीजों के लिए, एंड आई मस्ट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन एक्सेसिंग द राइट हेल्थ केयर. Healthcare, quality healthcare particularly in the most advanced sectors is expensive, and health insurance goes a long way to not just help you meet those costs, but very importantly, it gives you choice. कभी financial burden इस रास्ते ना आ जाए कि मैं बेस्ट ट्रीटमेंट अपनों के लिए ले पाऊं. That's why you need independence and wider choice by health insurance. And Niva Bupa has a policy. Specifically, I want to tell Dr. Leena and Dr. Sunil, as much as to the audience as well. We have a product called Smart Health Plus, very specially designed for people living with diabetes and hypertension. And उसमें काफी सारे versions हैं. In some versions, it pays for this monitoring that you said also. HbA1c, cholesterol, BP, BMI monitoring every quarter में this product pays for that. It also rewards people with almost 20% discount after 1 year on the premium if they do this test regularly and control their diabetes and other risk parameters. Dr. Sunil, Rakesh from Kochi, he wants to understand this. He says, my family has a history of diabetes. My father has diabetes. I'm now 39 years old. I'm following a very healthy lifestyle. I do exercise regularly. Do I still have high probability of getting diabetes despite all good habits that I'm following as far as my lifestyle is concerned? So, Dr. Baptosh, regarding this question, so as I discussed in the beginning, we all Asians are at a high risk of the diabetes. So no one is spared because of our genetic background. So anyone sitting here, listening here, is at equal risk of the diabetes. That is one.
So same goes for the gentlemen also. The second thing is that if you have a family member having type 2 diabetes, your risk further goes up. As we age, our risk of having diabetes goes further up. So there are factors which are modifiable risk factor, and there are factors which are non-modifiable risk factor. So genetics, ethnic background, increasing age, you can't change. तो सॉफ्टवेयर जो लग गया वो तो लगेगा, हमारे बॉडी में आ गया. But there are factors which we can change. So those factors: eating healthy, regular physical activity, maintaining ideal body weight, and regular monitoring of the diabetes, or regular check for the diabetes. So what the world guidelines says about the type 2 diabetes, when should the person should have their first diabetes check? Usually they say around 40-45 years at least it should be done for first time. In Asia, because the diabetes occurs little early, so mota moti bol ke chale to around 40 year of the age at least you should have your first health check done. If this is normal, then the repeat test can be done after 2 years or 3 years, because in that duration probably there is less likelihood the diabetes will develop, and even if develop, it not will come with the complication. But what I want to emphasize here, diabetes can happen to anyone in Asia. Even if there is no family history, it is not mandatory to have the family history. If there is a family history, we have increased likelihood of having the diabetes. How can we avoid? By maintaining ideal body weight, healthy physical activity, that we can defer diabetes. Over to Dr. Sir Ragesh, you're doing good. You continue managing your lifestyle. डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, you definitively, by your ethnicity, our ethnicity being Asian and Southeast Asian particularly, are a little more predisposed. Doesn't mean all of us will get it. Provided you continue, and given that your family history, continue doing good on your diet, exercise, personal habits and so on, but do not forget to regularly monitor yourself. Dr. Sunil, Devendra Kumar from Muzaffarnagar or Mustaqim Ahmed from Saharanpur, both of them have the same question. They want to know, और ये तो हम भूल गए बोलना, हमने तो ये assume कर लिया कि सबको पता है डायबिटीज के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, and that is their question, that what are the early symptoms of diabetes? Yes. Oh, so ये चीज हमने शायद बोला था, probably ये थोड़ा सा सबड्यू हो गया. टाइप 2 डायबिटीज में सिम्टम्स पे आधार पे नहीं चलने का है. टाइप 2 डायबिटीज में कई बार आपको सिम्टम्स होंगे ही नहीं. जब आप पहली बार चेक कराएंगे तो आपको मालूम नहीं लगेगा कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है. सिम्टम्स कब होते हैं, और जो डॉक्टर लीना भी सिम्टम्स बताए थे टाइप 1 डायबिटीज में, दीज सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ द शुगर रियली एक्सीडिबली हाई. मीन टू से शुगर, फास्टिंग का शुगर 250-300 के ऊपर है, पीपी शुगर 400 को क्रॉस कर रहा है, देन यू गेट दोज टिपिकल ऑस्मोटिक सिम्टम, जिसमें कि एक्सेसिव थर्स्ट होना, यूरिनेशन होना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, ये होता है. So many people with the diabetes will not have those typical symptoms. Symptoms आते हैं जब शुगर लेवल काफी हाई होता है. कई बार people might come, उनके genital itching infections हो रहे हैं because sugar is high, then they are passing urine which contains glucose and that can invite genital fungal infection. Sometimes they will come with a neuropathic problem. पैरों में tingling, numbness वगैरह हो रही है, उसकी वजह से वो आपको symptoms लगेंगे. तो या फिर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है, या फिर कुछ ब्लरी आईज एंड ब्लरी विजन्स हो गए, उनको रिपीटेडली अपने ग्लासेस चेंज करने पड़ रहे हैं. सो ऐसा अगर लगता है. इसके अलावा एक और ग्रुप आता है डॉक्टर बप्तोष, जिनको मैं थोड़ा सा सेंसिटाइज करना चाहता हूं, जिनको कभी पैंक्रेटाइटिस का अटैक हुआ पहले, किसी भी रीजन की वजह से, नॉन कॉज या अननोन कॉज की वजह से पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन हुआ, एडमिट हुए, उन लोगों का डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है. इसके अलावा कुछ हमारे ग्रुप होते हैं जो लोग कि ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसमें कि डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, अगर उनको शुरू में डायबिटीज नहीं है, उनको आगे चल के 30% इंडिविजुअल को हाई रिस्क होता है डायबिटीज होने का. तो ऐसे लोग वेट नहीं करें अपने सिम्टम आने का, टाइमली शुगर को चेक करा लें, और सही समय पर निर्णय लेने से आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और आपके हेल्थ में डिटेरिएशन नहीं होगा. हेल्थ अब कोई भी इंसान गेन नहीं करता है, हमको तो लॉस से बचाना है, डिप्लीशन से बचाना है अपने को. तो आपने ऐसा कर लिया तो आप एंजॉय करेंगे लाइफ को. वेरी ब्यूटिफुली सेड. हेल्थ को गेन करने की जरूरत नहीं है,
हम गुड हेल्थ के साथ जो हैं और जिस स्टेट में भी है उसको बचाना है फर्दर डिटेरियोरेट होने से. Dr. Leena, Vipin Maheshwari from Jaipur, and also very similar question from Neha Patel from Ahmedabad as well, is about Mr. Maheshwari asked that my son is 4-year-old and has type 1 diabetes. How to monitor his blood sugar levels? And similarly, Neha from Ahmedabad is asking, what is the role of insulin pump in children in type 1 diabetes? And in which cases is it advised? I will just touch briefly on it. जैसे blood sugar levels हमने जो बोला, so blood glucose levels को हम blood prick, finger prick करके finger prick test से glucometer से check कर सकते हैं, जो हमें एक single point दिखाएगा. It is like an individual photograph. So this is still the most recommended thing. और आप continuous glucometer sensors आप use करें ना करें, ये तो करना ही है. If you are not on a sensor, ये blood glucose prick 6 to 10 times a day should be done. उसके specific points होते हैं, not randomly 6 to 10 times a day, which of course we can explain to you better when we can explain to you better on a one-to-one basis. Then the second thing is आजकल technology is advancing, so we have the continuous glucose sensors. तो यहाँ पर हम एक patch की तरह लगा देते हैं. So that उसमें every 5 minutes it keeps on checking the skin के अंदर जो interstitial spaces है, टिश्यूज के बीच में स्पेसेस है, उसको शुगर चेक करते रहते हैं. इसमें डिफरेंस होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो ग्लूकोज लेवल है, स्किन का वो ग्लूकोज लेवल आने में टाइम लगता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जनरल ट्रेंड दिख जाता है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, हाई स्पाइक कर रहा है, लो हो रहा है. सो दीज आर द टू वेराइटीज एंड ऑफ कोर्स cost is a factor, and I'm sure that Dr. Bhavtosh's insurance policies will help you take the CGMs and you utilize it. But we have really seen कि target in range, जो time in range जो बोलते हैं कि कितना समय बच्चे का शुगर रेंज में है, that is important. 6-7 बार चेक करने से इतना आइडिया नहीं मिलता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, टेक्नोलॉजी अबाउट इंसुलिन डिलीवरी ऑल्सो. इंसुलिन को हम सिरिंज से ले सकते हैं, इंसुलिन को हम पेन से ले सकते हैं, इंसुलिन को हम पंप से ले सकते हैं. जैसे पैनक्रियास में बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, बेसल लेवल खाने के टाइम थोड़ा सा भी खाया तो इंसुलिन बढ़ाती है. वैसे पंप धीरे धीरे इसमें एक ही इंसुलिन कार्ट्रिज होता है जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, और उसको डिफरेंट स्पीड में छोड़ती है. एक कंटिन्यूअस स्पीड में बेसल रहता है, और जब हम थोड़ा सा खाते हैं और हम उसमें वो एक मोबाइल की तरह होता है, हम उसमें फीड कर देते हैं कि हमने इतना कार्ब खाया, शुगर इतना है. सो बहुत तरह के पंप्स होते हैं, किसी में वो सेंसर से लिंक्ड होते हैं, तो सेंसर से दिख जाता है क्या शुगर्स है, एंड वी फीड कि हमने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, तो वो कैलकुलेट कर देता है कितना इंसुलिन चाहिए. एडवांटेज ये होता है कि अगर हम दिन में 6 बार खाते हैं, अगर हमने एक हाफ कप चाय भी पिया अगर, तो उससे भी जो थोड़ा सा शुगर राइज होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो प्रिसाइज डिलीवरी होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. और एक एडवांटेज होता है, सपोजिंग जैसे प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं, मोस्टली आप देखेंगे 4 o'clock 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग उनके शुगर्स बहुत हाई होते हैं, कुछ भी कर लो वो कंट्रोल नहीं होता है. सो इन दोज कंडीशंस व्हाट वी कैन डू, जो ये बेसल रेट होता है, हम उसको मॉर्निंग में कितना इंसुलिन जाना चाहिए पर मिनट या पर आवर, उसको हम स्पेशली मॉडिफाई कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock to 5 o'clock मुझे ज्यादा इंसुलिन चाहिए, शाम को 6 o'clock to 8 o'clock में खेलने जाती हूँ, सो उस समय मुझे कम इंसुलिन चाहिए बिकॉज एनीवे आई एम यूजिंग अप द ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग. सो ये सब इंसुलिन पंप्स होते हैं. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑफ इट कि वो एक्सपेंसिव होता है, बट जिसको बार बार शुगर चेक करके उसको यूज करना आता है और सीखना चाहता है और करना चाहता है, फॉर देम पंप इज द बेस्ट. अगर आप सिर्फ पंप शो के लिए लगाए हैं और बस जब इंसुलिन लिया, ठीक है, अच्छा अंदाजा कुछ इंसुलिन लगा दिया, बस पेन की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, देन प्रॉब्ली इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू एज मच एज इट शुड. सो यू मस्ट नो द टेक्नोलॉजी एंड you must know how to use the technology to your advantage. So I think, Neha, it would be very good if, at any point of time, if you're considering insulin pump, in fact, the new ISPAT guidelines have made it mandatory, and they say that insulin pump must be used by toddlers and adolescents. Extremes of age groups होते हैं जिनमें बहुत variability होता है, insulin pump gives really good results. I'm very sensitive. I'm cognizant of the time. We have hardly any time left. And just one last question to both of you. In brief, new technologies, new treatments like
islet cell transplant. Is it indicated, recommended in type 2? Is it recommended, indicated in type 1? And what are some considerations before somebody considers a treatment like that? I will let Dr. Sunil go first. Okay. So I will probably bypass this question to Dr. Leena, because Okay. in type 2 diabetes, I will probably give a brief thing about the technology and newer advancement in the type 2 diabetes. There is huge water has flown in the treatment of the type 2 diabetes over last 8 or 10 years. There are new drugs which really take care of the diabetes, also prevent the complication like kidney disease. So new group of the drug are really changed the way we look at diabetes. Similarly, there are drug like GLP analog. These are nothing but hormones secreted from intestine. These hormones control the insulin secretion and glucagon secretion, modulates our metabolism and weight. And over last 100 years, there have been research going on this field. And only in 2005, first molecule was approved as a exenatide for the injection as a GLP analog. Now there are GLP analog which can be given weekly basis and orally as well. And two recent GLP analog like semaglutide and tirzepatide are showing a very promising role in the weight reduction also. Even in the non-diabetic, they have shown weight reduction of 15 and 22%, which is unimaginable. Why these drugs for weight reduction are different from the previous weight reduction drug? Because previous weight reduction drug have no long-term track record. New diabetes drug come with all cardiovascular outcome trial. मतलब कि उनका बहुत अच्छा ढंग से स्टडी होके, and these drugs are then licensed. Also, there is more than 1.5 decade experience with this group of the drug. So these drugs really helpful for the management. So you have to discuss. Of course, it comes with a cost. Regarding the islet cell transplant, I will bypass this question to Dr. Leena. Yes. So as pediatricians, we are very protective and possessive about our children. So we will not generally hand them over for any experiments unless and until there is no way out. So, and what I want, obviously you would have got what I want to say, कि ये सब experimental है, रिसर्च हो रही है. सो देयर आर टाइप 1 डायबिटीज रिसर्च बहुत फेजेस में हो रही है. पहले डायबिटीज डेवलप होने से पहले, जिसको प्रिवेंशन ट्रायल्स बोलते हैं, न्यूली डायग्नोज डायबिटीज, उसको हम बीटा सेल्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्या, एंड कैन बी रिवर्स इट, जो कि अभी तक हुआ नहीं है. सो आइलेट सेल ट्रांसप्लांट अब sounds very logical कि बच्चे का आइलेट्स नहीं है, आप आइलेट सेल्स दो, वो पेंसिल बनाना शुरू करेंगे. But it is a transplant. So if it is a transplant, the first thing that goes with transplant is you have to, आपको body का immune system को कम करना है. So you have to use those immunosuppressive medications and for years and years to come. So do you think that is easy? Do you think that is safe? Do you think that has less morbidity than giving insulin? और एक बार हम जब आइलेट सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी कितनी है. सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि ठीक है, मे बी इन सम चिल्ड्रन इट इज इफेक्टिव फॉर अ फ्यू इयर्स, देन अगेन इट कम्स बैक. सो इज इट वर्थ इट? सो कि आप वही 2-3 साल, इफ यू कैन मैनेज वेल विद इंसुलिन, देन शुड यू नॉट डू दैट. सो आई थिंक टिल द research and technology improves such that ये lifelong remission हो रही है with whatever maybe in the near future to come, who knows, तब तक we would not say that this is something which is very which is done out of experiment and out of research activity. So we generally should not think of it that way. Motivation ये होना चाहिए how to use insulin better. That is one thing. Second thing is जब बहुत maybe later stage में, जब because of type 1 diabetes kidney damage होते हैं and someone is planning for a renal transplant, उस time में there has been double renal and pancreas transplant. So आप paper में कभी-कभी rarely you will see headline pancreas transplanted and type 1 diabetes reversed. This person was told that she has to take insulin lifelong, लेकिन pancreas transplant कर दिया और diabetes ठीक हो गया. This is not usually done. Pancreas को transplant करने में भी a lot of immunosuppressives are required. So that is not the standard dose. Research चल रहा है and we will see what comes next. Thank you, Dr. Leena. Thank you, Dr. Sunil. Ladies and gentlemen, it has been wonderful session. I'm sure each of you would have benefited
got an answer to a lot of questions that you would have in your mind before you joined this session. And I would really, really like to thank Dr. Sunil Mishra and Dr. Leena Priyambada as the experts joining in today. Thank you and really appreciate your time. Thank you very much indeed. Thank you, Dr. Leena. This was a wonderful interaction. Yeah. Thank you, Dr. Sunil, and thank you, Dr. Babatosh. It was really nice talking to everyone. Thank you very much.